Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 16. The name of the paper is Introduction to English Literature 1. The two topics we'll discuss today are oxymoron and antithesis. This lecture is specifically for the students of BS English first semester GDC Pabi and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. The first figure of speech for today is oxymoron. Oxymoron is actually putting two words together having the opposite meaning. So we associate two words having the opposite meaning, we bring them together, and they create a special type of effect. And this figure of speech is referred to as oxymoron. For example, this sentence, James I was the wisest in Christendom, wisest fool in Christendom. Two words were having the opposite meaning have been placed side by side, wisest and fool. And it has that meaning. It looks as if it is meaningless, but it isn't, because James I believed that kings are made by God and that he is not answerable to the human beings. So therefore, and he was an educated person, he was an intelligent person, but he made himself fool. So you can see that he was wise, but he made himself fool. The same is the case with these three lines from Tintin Abbey by Wordsworth. He says that time is past, that time has already gone away, and all its aching joys are now no more. He's talking about the childhood when everything is enjoyed to its full, and it is enjoyed so much that joy then gives you aches, which means that you enjoy a lot, more than enough. So he says that time is past and all its aching joys are now no more, and all its dizzy raptures. And these two words are also dizzy and rapture, having the opposite meaning. So you can see that two words are placed together which have the opposite meaning, and they are placed side by side. The figure of speech is known as oxymoron. तो ये पहला फिगर ऑफ स्पीच हमने जो पढ़ा, इसका मतलब ये है कि दो अल्फाज को साइड बाय साइड रखा जाए, करीब रखा जाए और उनके मीनिंग्स अपोजिट हो और वो एक स्पेशल किस्म का इफेक्ट पैदा करे, ये फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन कहलाता है. हम इसको रीड करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं. एन ऑक्सीमोरन इज द एसोसिएशन, ये ताल्लुक है, और ब्रिंगिंग टुगेदर या इकट्ठा करना है, ऑफ टू वर्ड्स या दो अल्फाज का, और फ्रेजेस या फ्रेजेस का. तो दो अल्फाज हैं, वाइजेस्ट और फूल, यहाँ पे ये फ्रेजेस भी हो सकते हैं, हैविंग अपोजिट मीनिंग, जिनके मीनिंग अपोजिट हो. So it is actually placing the words having the opposite meaning. For example, James I was the wisest fool in Christendom. जेम्स द फर्स्ट क्रिस्टेंडम में एक वाइजेस्ट फूल था. इसका ख्याल ये था और इसका बिलीफ ये था कि बादशाह गॉड बनाता है, तो लिहाजा वो इंसानों के लिए के सामने जवाबदेह नहीं है, तो जो मर्जी में आए करे. और ये अच्छा खासा अक्लमंद इंसान था, एजुकेटेड बंदा था, तो इसने वाइजेस्ट था लेकिन इसने अपने आप को फूल बनाया. ये वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी से लाइन है, ये बचपन का जिक्र कर रहा है. कहता है दैट टाइम इज पास्ट, वो टाइम खत्म हो गया है, बचपन. एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज आर नाउ नो मोर, और इसकी जो खुशियाँ थी इंतहा दर्जे की वो ख़त्म हो गई. एकिंग तो दर्द को कहते हैं,
اور جائز خوشی کو کہتے ہیں. تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنا ہنسا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو اس طریقے سے ایک انجوائز کا بھی مطلب ہے، یہ بغیر مطلب کے نہیں ہوتے بلکہ مناسبت سے یہ بولے جاتے ہیں، موقع کی مناسبت سے. تو یہ عکس موران ہوا جس میں دو آئیڈیاز، دو ورڈز یہ سائڈ بائی سائڈ رکھے جاتے ہیں اور ان کے اپوزٹ میننگ ہوتے ہیں. The second item or figure of speech for today is antithesis. Anti means against, antithesis means to place. So once again, sometimes words or one word is set against another, or one idea sometimes is set against another idea, and the construction, the grammatical construction is often parallel construction, and it is used, the effect is the heightening effect, the enhancing effect. For example, if we take this first sentence, God made the country, but man made the town. In this sentence, God made the country is placed against man made the town. And these two ideas have been placed together. In this case, these are sentences. But the grammatical structure of both these ideas is the same. God made the country. You have God as the subject, made as the verb, the country as the object. And in this, you have man made the town. Man as the subject, made as the verb, and the town as the object. So the grammatical structure is the same. When this is the case, that grammatical structure is the same, we say it is a parallel structure. So antithesis is often a parallel structure, and it is sometimes a word, sometimes an idea. This idea is placed against another idea in parallel structure. This is called antithesis. The next example is united we stand, divided we fall. So in this case, again, this is a parallel structure, and the ideas are juxtaposed or placed side by side, and these ideas are having the opposing meaning, so they are set against each other. Then speech is silvery, silence is gold. Again, this is a parallel structure. The grammatical structure of both the ideas is the same. एंटीथेसिस में जिस एंटी का मतलब है अगेंस्ट और थीसिस प्लेसिंग रखने को कहते हैं. इसमें या तो वर्ड दूसरे वर्ड के साथ रखा जाता है या आइडिया दूसरे आइडिया के अगेंस्ट रखा जाता है, और ये इफेक्ट को एनहांस करता है, हाइटन करता है, ज़्यादा करता है, और दोनों में कंट्रास्ट होता है. तो हम कहते हैं कि कंट्रास्टिंग आइडियाज आर प्लेस्ड साइड बाय साइड. तो ये कंट्रास्ट ये पैदा करते हैं. उसमें जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है इसको पैरेलल स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक जैसे है, तो इस वजह से ये कहलाते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर. तो इसको हम पढ़ते हैं. एन एंटीथेसिस, एंटी against, antithesis placing is a figure of speech in which one word or idea, जिसमें एक लफ्ज है आइडिया, is set against another, दूसरे आइडिया के अगेंस्ट रखा जाता है with the object of heightening the effect, और मकसद होता है असर को दोबाला करना of what is said by contrast, और ये असर को ज़्यादा करना बाय कंट्रास्ट होता है एक दूसरे के मुतज़ाद बयान करके. फॉर एग्जाम्पल, गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल.
اسپیچ از سلوری، سائلنس از گولڈ. تو یوں یہ دو ہمارے پاس فگر آف اسپیچ ہے آکسیمورن، جس میں دو الفاظ اپوزٹ میننگ کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب رکھے جاتے ہیں ایفیکٹ کے لیے، اور اس میں الفاظ یا آئیڈیاز ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رکھے جاتے ہیں اور یہ بائی کنٹراسٹ ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں. تھینک یو اینڈ گڈ لک.